आज के वीडियो से हम सीखने वाले हैं इंस्टाग्राम पे ब्रांड प्रमोशन कैसे करते हैं। टाइटल इज गिवन लेवरेजिंग इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स फॉर ब्रांड प्रमोशन. Leveraging means using old technique to get advanced results. Now mostly all students are using Instagram, so I think there is no need to discuss about what is Instagram. Influencers. What is meant by influencers? Influencers वो पर्सन होते हैं जिनके सोशल मीडिया पर अकाउंट होते हैं. इन्फ्लुएंसर्स वो होते हैं जिनके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स होते हैं, जो अपने दर्शकों के डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, स्पेशली प्रोडक्ट, सर्विसेज और आइडियाज के बारे में. वो लोगों के खरीदने, देखने, फॉलो करने और सोचने के डिसीजन पर अफेक्ट करते हैं. देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स. सो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करने से पहले टाइप्स सीखते हैं. नैनो इन्फ्लुएंसर्स. नैनो में उनके फॉलोअर्स 1K to 10K होते हैं. If you want to use them for your brand promotion, they will cost 500 to 3000 for post reels. If you want to promote stories, then it will goes to 300 to 1500. Second type is micro. In micro, followers will increase. उनके followers थोड़े ज़्यादा होते हैं, 10K to 50K. Cost per post or reel is also increased from 3000 to 15,000 depends upon the product, and story promotion cost is also increased from 1500 to 5000. Third one is macro. Macro के followers 50K to 500K होते हैं. उनकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है. इफ यू वांट टू प्रमोट स्टोरी, देन इट विल गोज 5000 to 25,000. लास्ट वन इज मेगा. दे आर हैविंग फॉलोअर्स मोर देन 500K. इफ यू वांट टू यूज मेगा इन्फ्लुएंसर्स फॉर योर ब्रांड प्रमोशन, देन दे विल कॉस्ट per post, per reel 80,000 to 5 lakh depends upon product which you want to promote. To use Instagram brand promotion, use instagram.com. Open your account. First, here below profile, search for setting option. Now see for professionals. Here we have to create professional account. So click on professional account. For what purpose you are going to create this professional account, select that category. If you want to change it, multiple categories are available, you can change it. Enter your email, which will be public, and submit it. Adding phone numbers will be optional. We can add it later on. Professional account settings saved. How to check whether our professional account is created or not? See here, dashboard is there. Click on dashboard. If you are able to see insights, add tools, it means that your professional account is created here. From setting, once again, we have to check account privacy. So keep it as it is. You have to check whether your account is private or not. Once setting to professional account is done, then go in search. Now, first we have to search influencers for our product. For example, if I want to promote my YouTube channel, then I have to search related to that only. By using hashtag, enter keywords related to your product. For example, here I want to promote my YouTube channel which is created for IT engineering students. So I entered hashtag IT engineering. आपको इन्फ्लुएंसर सिलेक्ट करना है. सो कौन सा भी इन्फ्लुएंसर सिलेक्ट नहीं करना है. यू विल गेट मैनी कम्युनिटीज, मैनी पर्सनल अकाउंट्स ऑल्सो. आपको वो इन्फ्लुएंसर्स फाइंड आउट करना है जिसके followers ज़्यादा हो. You have to view their accounts also and check real-time comments, then engagement with their followers, and then decide which influencer you want for your brand promotion. When you will search and you will get a result, open any particular. From that, you will get videos, their post. अच्छे से वो चेक करो and see which will be better for your product. Once you have selected influencer, तो आपको उसके प्रोफाइल में जाके उसे मैसेज भेजना है, very professional message that I want to promote my product by using your account,
योर फॉलोअर, उसे आपको अपने पोस्ट के हिसाब से पे करना होगा। पेमेंट कैसे करना है, पेमेंट की रेंज क्या होती है, दैट आई ऑलरेडी हैड एक्सप्लेन टू यू। तो इन्फ्लुएंसर सिलेक्ट होने के बाद आपको जो भी आपका पोस्ट है, आपका वीडियो है, आपकी रील है, वो उसे सेंड कर देना है। Now sometimes many competitors are also there. It is always good to follow your competitor. यहाँ पर आपका काम है राइट इन्फ्लुएंसर को सर्च करना, मैसेज के थ्रू उसे रिक्वेस्ट करना, एंड वंस दे विल एग्री विथ योर टर्म्स एंड कंडीशंस, वंस यू आर एग्री विथ देयर टर्म्स एंड कंडीशंस, send your reel, send your product info to them. They will promote it on their page. In your practical, you have to promote eco-friendly skincare products. So considering that, add related keywords using hashtag and find out right influencer for your product and increase brand visibility. इस प्रैक्टिकल में लिखा है क्रिएट एन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर आउटरीच प्लान। मतलब आपको इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेशन के लिए एक स्ट्रक्चर्ड योजना बनानी है, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉर व्हाट पर्पस यू आर गोइंग टू क्रिएट दिस ब्रांडिंग। इसमें आपको आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वो डिसाइड करना है, सही इन्फ्लुएंसर सिलेक्ट करना है, उनसे कांटेक्ट कैसे करेंगे वो डिसाइड करना है। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम से मैसेज करोगे, उनके बायो में ईमेल आईडी दिया हुआ है, तो ईमेल आईडी से आप उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हो, या फिर कभी कभी इन्फ्लुएंसर का कोलैबोरेशन फॉर्म भी पब्लिक होता है, वो फिल करके आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये प्रैक्टिकल आपको असाइनमेंट पर्पज के लिए है, तो स्टूडेंट्स को रियल में पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हाइपोथेटिकली कैंपेन प्लान तैयार कर सकते हो। When you are going to pay, जब आपको रियल में कोलैबोरेशन करना है और रियल में ब्रांड प्रमोशन करना है, तब आप पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।